Good evening, all. We'll start shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So, most of you know, for those who are joining for the first time, this webinar is all about how we should prepare ourselves for the next week. So, we'll briefly touch upon how the markets were during this week, and the main focus area will remain on our positioning for key indices, Nifty, banking index, sectors to focus on, stocks to watch. Everything we'll try to cover in next 20 minutes, followed by the Q&A. So in case if you have any questions, once we end this webinar, post this feedback, you can start posting your question using that Q&A button which is there in front of your screen. तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वेबिनार में और नेक्स्ट 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाए कि हमको निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में क्या देखना है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, कौन से स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में होने चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा कोई भी सवाल अगर होता है आपका स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, तो Q&A सेशन होगा अपना पोस्ट सेशन, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं यूजिंग दैट Q&A बटन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है उस पर आप दबाएंगे, लिखकर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद a disclaimer that it's not a trading or investment recommendation. We are just sharing our observations. So before you make any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. जो भी हम बात करने वाले हैं बेसिकली ये हमारी ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर, बेसिस द डेटा, बेसिस द प्राइस मूवमेंट, और उसमें कोई भी अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप बात करें। दिस इज हाउ द मार्केट्स लुक लाइक, means this week 1.5%, 2% kind of a cut for both Nifty and Sensex. Mixed trend on the sectoral front. On the gaining side, pharma, metal, energy, auto, right? And then the losing side, realty, IT, financials, FMCG, and banking. So if you remember last week we were discussing, in fact, it's been almost like 2 months now that we are talking about 4 key sectors: banking, auto, metals, and energy. So out of 4, 3 were on the gaining side. Uh, Addition to that list is pharma. Banking ended with marginal cut this week, 1% lower. Talking about stocks, the top 5 gainers and losers in the Nifty 50. So, couple of names from the middle basket: JSW Steel, Tata Steel, Apollo Hospital, NTPC, and Titan. They've also ended in a positive territory. On the losing side, but eternal, very sharp decline, roughly around 8%, followed by TechM, Bharti Airtel, Trent, and Wipro. The 2 names from the IT pack for yet another week among the top 5 losers in the Nifty 50. तो ये देखिए पूरे वीक का लेखा जोखा, इंडेक्स का, सेक्टर्स का, निफ्टी के गेनर्स लूजर्स का। तो इससे एक चीज जो क्लियर है कि इंडेक्स में डेंट पड़ा, बट जो सेक्टर्स जहां पे स्ट्रेंथ थी वो ज्यादातर रही। बैंकिंग, ऑटो, मेटल एंड एनर्जी, इसके बारे में हम पिछले करीब 2 महीनों से बात कर रहे हैं कि इन्हीं पे आप फोकस करिए, इन्हीं सेक्टर में आपको अच्छी स्ट्रेंथ गेनर्स नजर आएंगे। तो बैंकिंग के अलावा ज्यादातर सारे सेक्टर्स आपने पॉजिटिव साइड पे, जो पॉजिटिव साइड पे बंद होते हुए देखे, वही सेक्टर रहे। साथ साथ फार्मा का नाम भी ऐड हुआ। वहीं पे गेनर्स लूजर्स में देखिए, गेनर्स का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं था, इतना कि लूजर्स ने लूज किया। जिस तरीके से इटर्नल में करीब 8% के कट, और आईटी काउंटर्स में बीच बीच में रिस्पाइट आने के बावजूद भी अगर आपके 2 स्टॉक टॉप 5 लूजर्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि आईटी में भी प्रेशर है। और जैसे कि हमने देखा कि सेक्टर स्पेसिफिक में भी रियल्टी के बाद आईटी में ही कट हुआ। तो लास्ट वीक हमने बात की थी कि रियल्टी, आईटी और एफएमसीजी ये अवॉइड करने वाले सेक्टर हैं और वो टॉप लूजर्स में लिस्ट में भी हैं, राइट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। अब ये तो हो गया कि लास्ट वीक क्या हुआ, अब नेक्स्ट वीक कैसे चीजें होने वाली है। तो पिछले 3 हफ्तों से वी वर सीइंग दैट इंडेक्स वाज होवरिंग इन दिस 25,400 to 26,000 बैंड, राइट। 25,400 से लेकर 26,000 के बैंड में हम ट्रेड कर रहे थे। दिस वीक ऑल्सो इंडेक्स ट्राइड, like on multiple occasions, to hold that area despite the reattempt. But on Friday, this is today's candle, right? Nifty surrendered that level decisively. Now what? So if you remember last week, in fact, earlier also we've discussed about the moment we surrendered 25,400, then this long-term moving average is going to be the first area of support. That is 25,240. We have surrendered that long-term moving average also. What next? The gap on the daily chart means, if you remember, this was the move post India US trade deal announcement. Now, this gap close to around 25,100 is something that Nifty is set to fill. After that, in case if we fail to hold this area also, then 24,800, 400 is something that the market might attempt. So बेसिकली हो क्या रहा था कि पिछले 3 हफ्तों से हम केवल यही एक रेंज को ही प्ले होते हुए देख रहे थे कि 25,400 के नजदीक आते हैं तो बाइंग आ जाती है, मार्केट रिकवर कर जाती है। और जितनी बार आप 26,000 के नजदीक जा रहे थे, मार्केट प्रेशर फील कर रहा था। और इन सब के बीच में बैंकिंग स्ट्रेंथ बनाए हुए था, ऑटो स्ट्रेंथ बनाया हुआ था, जो कि अभी भी है। आईटी की वीकनेस थी, कुछ एक और सेक्टर्स और हैवी वेट्स की वीकनेस। फाइनली आज फ्राइडे के दिन हमने ये जो कैंडल देखी, ये जो डिक्लाइन दिखा, ये आज का मूव है निफ्टी का। तो इसमें दो चीजें हुई, आपने 25,400 के नीचे भी गए और जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, उसके नीचे भी इंडेक्स पुश हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब प्रेशर यहां से और बढ़ सकता है, और जो गैप है, बेसिकली इसकी हमने बात की थी पहले भी, निफ्टी का ये गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी अब ज्यादा बढ़ गई है, राइट। और ये गैप फिल होने के बाद क्या होगा? अगर वहां पे भी नहीं रुके तो 24,800 और 24,400 ये आपके लेवल्स रहेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। रिकवरी होती है तो क्या रहेगा? 25,400 तो रहेगा ही रहेगा, बट मेजर रहेगा ये ग्रीन लाइन 25,600 के पास की, एंड देन 25,900, 26,000 लेवल्स। सो अभी के लिए स्ट्रक्चर लुक्स वीक टू अस व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। दिस गैप इज जस्ट अ मार्जिनल सपोर्ट। वी नीड टू सी in the following slide how the banking performs, and that would dictate whether we are going to stop here around 25,100 or this decline will continue, ठीक है। तो 25,100 के पास बैंकिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है, दूसरे सेक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, वो काफी हद तक डिक्टेट करेगा, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है। 25,100 के नीचे 24,800 वाली सिचुएशन दिख रही है। Now let's talk about banking. So banking, till yesterday we were very close to the record highs, right? As you can see that we were maintaining above the short-term moving averages also, completely opposite to what we are seeing in Nifty index, right? Nifty has surrendered its long-term moving average. Banking का long-term moving average यहाँ पर है 57,500 पे, और ये हम बैंकिंग में अभी भी रिकॉर्ड हाइस के पास खड़े हैं, राइट। तो आज डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट रहा सपोर्ट। पहला तो आपका 20 AM में ये सरेंडर हो गया। इससे पहले जो आपका 60,800 के लेवल थे, 60,800, दैट ऑल्सो वी हैव सरेंडर्ड। तो डेफिनेटली बैंकिंग में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, स्पेशली ड्यू टू द हैवी वेट्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दे वर इन द बैक फुट, और PSU banks, they have done exceptionally well in the recent past, so normal profit taking is quite evident कि वो होगा, और वही हो रहा है। But banking is still strong, right? Banking may, what we need to see that this zone close to around 59,800 will be the next major support. We have immediate support even at current levels, 60,400 mark.
And that's the reason why we are saying that the moment we test 25, 100 in the Nifty, if banking managed to maintain its strength and hold these current areas, then probably we are set for a rebound. तब मार्केट में कोशिश होगी रिकवरी की. अगर बैंकिंग ही सरेंडर कर देता है कि चलो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होने देते हैं अब, देन प्रॉब्ली विल सी फर्दर करेक्शन इन द मार्केट 24,800 की जो हमने बात की. तो बैंकिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि 59,800 ये अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर आपका ये ग्रीन लाइन 59,000 की जो आपकी 100 डेज, right, which also coincides with this Fibonacci area also. Banking still strong, but we need to be cautious. If you have existing longs, booking partial profit is advisable. थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में बैंकिंग में भी कोई बुराई नहीं है, बावजूद इसके आउट परफॉर्मेंस के. स्पेशली पीएसयू जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, वहां थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकता है, राइट. इन केस ऑफ रीबाउंड 61,000 आपका ऑलमोस्ट ये हाई, एंड देन 61, 700, 800 रिकॉर्ड हाई जोन, ये आपके रेजिस्टेंसेस रहेंगे, राइट. बट बैंकिंग इज स्टिल ओके, मींस बैंकिंग में कोई ऐसा चैलेंज नहीं दिख रहा है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर होपिंग दैट कि निफ्टी को भी शायद ये हेल्प करे टू कैप द डैमेज इन द कमिंग वीक, राइट. दैट विल सी. नाउ लेट्स जंप टू द sectors and stocks. So auto, metal, banking, energy, add pharma to that list. 5 sectors wherein we still feel we have noticeable strength. Pharma, after a phase of pause, consolidation, underperformance, we are again seeing strong attempt of recovery. So Oro Pharma from the pharma basket is something that we see as a potential candidate for fresh recovery. We have seen stock like Sun Pharma, Lupin, Dr. Reddy's. They have done well in the recent past. Oro Pharma, as you can see, that's been almost a year-long consolidation phase. And finally, we are quoting around the upper band of this range. This is the trading range for Oro Pharma, right? And we are currently trading around the upper band of the same. So possibility of a sustained recovery is high this time. So one should keep a close eye on Oro Pharma from the pharma basket. Oh, sorry. तो देखिए, जैसे कि हमने बात की कि सेक्टर्स में कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, तो बैंकिंग, ऑटो, मेटल, एनर्जी, ये हमारा कंसिस्टेंट है, बावजूद इसके कि आज जो प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन देखने को मिला है. फार्मा को भी उस लिस्ट में ऐड करिए और सेलेक्टिव रहिए. बट जैसे कि मार्केट का अंडरटोन देखिए, जब इंडेक्स का अंडरटोन नेगेटिव है तो स्टॉक्स कितना टाइम तक कितना स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, दैट वी हैव टू सी. क्योंकि इंडेक्स एक दिन की गिरावट है, 2 दिन की गिरावट है, दैट वी हैव टू सी, राइट. बट इसमें जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे वही नेक्स्ट लेग के लीडर्स होंगे. तो अभी के लिए इंडिकेशन है कि फार्मा भी उस लिस्ट में हो सकता है जहां पे कि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखे. एंड औरो फार्मा, जिसमें कि एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, अपने कंसोलिडेशन रेंज के अपर बैंड के पास है, तो यहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है अपने को, राइट. तो औरो फार्मा पे यू शुड कीप अ फोकस. Next on the list is Siemens. As you can see, again, a very similar structure to what we have in Oro Pharma. Like, मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि एक करेक्टिव फेज और उसके बाद कंसोलिडेशन, सेम एक करेक्टिव फेज उसके बाद कंसोलिडेशन. Now it is on the verge of breakout from the same. It's almost like confirmed with noticeable surge in the volume. Siemens also we feel has potential to maintain its positive tone in the coming week. तो यहाँ पे भी आप फोकस रख सकते हैं. जस्ट लाइक हमने जैसे बात की कि ऑरो फार्मा में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, तो सीमेंस में भी उस तरीके का पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है, जो कि पॉजिटिव टोन हेल्प कर सकता है आने वाले वीक में. Lastly on the list, since we are talking about negative structures in the index, in the past weeks we've talked about IEX, Indian Hotel on the weak side, and they are still gradually inching lower.
VBL, Varun Beverages, very critical zone that's currently hovering in. So as you can see, it's a very tight range consolidation that the stock has been experiencing on the weekly chart. And currently we are trading around the lower band of the same. राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है वरुण बेवरेजेस का स्टॉक, वो अपने लोअर बैंड के पास एक ब्रेकडाउन के बाद दोबारा से एक कंसोलिडेशन, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिले, एक डिप और आ जाए आपको शॉर्ट टर्म में। राइट, तो शॉर्ट टर्म का बायस इसमें नेगेटिव हो सकता है, जब तक कि आप 480 490 को ब्रेक नहीं कर देते ऊपर, तब तक रिस्क रह सकता है यहाँ पे कि एक करेक्टिव फेज देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में आपको वरुण बेवरेजेस में प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस इफ मार्केट्स ऑफर यू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, IEX, VBL, DLF, these are some of the names that you should be focusing on, right? जस्ट टू सम इट अप, निफ्टी का टोन नेगेटिव है और 25,100 के पास हम रुकेंगे या फिर 24,800 पे जाएंगे, वो डिसाइड करेगा बैंकिंग। बैंकिंग के लिए 59,800 ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन केस इफ वी होल्ड, then 61,000, 61,700 in banking. Stock specific, but we'll continue to find opportunities. Of course, one should not be aggressive in the positioning. Oro Pharma, Siemens, जहाँ पे strength दिख रही है, and VBL, which looks weak to us, right? So yeah, this is all from the presentation parts. Now let's do a quick feedback poll, and then we can start with the Q&A session. So here is the feedback form. Please fill in your feedback and then we can start with the Q&A session. In case if you have any questions, use that question mark wala button. Please fill in your feedback and those who are done with it, they can start posting their questions. कोई सवाल है आपका, अब आप लिख कर पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मार्क का बटन है उसको प्रेस करना है, उस पर लिख कर अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं। We are almost done with the feedback now. Okay, let's move to Q&A. Okay, so we have first question from Mr. Mithilesh on Birlasoft. So basically, IT as a pack, we are still not seeing any sign of respite. Yes, there was a bit of a pause, a consolidation that we are seeing, but IT has breached April month, this 2025 lows, Nifty IT index around 30,900 mark. So this kind of break after almost like 2 years of consolidation, usually this kind of move further put pressure in the longer duration. So there could be a bit of a consolidation. I'm not seeing that IT is going to fall another 5-10% from current levels, but possibility of gradual decline is still high. So avoid IT if the view is short term until we see a sign of reversal. तो आईटी में चाहे आपके मिड कैप आईटी के नाम हो, चाहे आपके लार्ज कैप हो, थोड़ा टाइम के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो अवॉइड करना ही समझदारी है आपको, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव शंकर that PSU bull run will continue. Indications are definitely positive if we talk about the longer time frame. Shorter time frame, like we are seeing banking also witnessing a bit of profit taking, so possibly the PSU might also feel the heat. But longer term, yes, we feel that the trend is here to stay, especially in some of these PSU names
it's like multi-year range breakout or surge that we have seen. So I doubt it's going to fade anytime soon, right? But short term, yes, there could be a phases of profit taking, correction, consolidation after this strong surge. But medium to long term, we have a positive view. Okay, next we have Shiv Kumar Sharma ji on Kenfin Home. Okay. Kenfin Home, a range breakdown. Stock was holding very strongly around its recent highs. So this may result in further pressure, further profit taking. So if you have existing position, keep a close watch on this level of 820, because 820 is the previous swing high. And in case if it fails to hold, then probably we are set for 785 or maybe lower. Even at current levels, we have marginal support, but major comes at around 820. So prudent approach is to reduce your position in case if you have any, and wait for any sign of reversal above 920 mark to re-enter if the view is short term. Okay. Lavanya has this question on Hudco, bought at 2, now very low. I understand. She means uh, we have a list of PSUs wherein we are seeing pressure, especially railway counters. Hudco, apart from that railway space, is where we are seeing pressure. And still, there is no sign of recovery or reversal. There was an attempt of rebound of late, but it fizzled out. So, in my opinion, possibility of further decline seems high. Around 175 to 170 is something that the stock might retrace. So, and in case if there'll be any recovery, 195, 205 will be the strong resistance area. Right. So, basis that, the advisable thing is to do is to reduce the position and sit on sidelines to see if it offers you buying opportunity uh, during this corrective phase around 160.65, or once it surpasses 210, not in between. Okay. Benjamin has this question. Dixon is falling from September. Is it a right time to invest for the long term? So yes, see, long term definitely it looks promising considering the kind of development that we have seen in the sector. Uh, but short term, it may continue to trade lackluster or witness volatile swings. So if you are okay handling volatile swings, and maybe close to around 92, 9300 is what we are seeing as a possible downside range during this range bound move, then you are good to uh, invest. Even at current level, you can start accumulating. Okay, what to do in mid cap and small cap? See, mid cap, they are comparatively stronger. Still, it's not that there's something different, because mid cap index is very close to its record highs. On the other hand, for small cap, like what we always share, 17,600, 500 in the Nifty small cap is still a very strong hurdle to cross. So you may write it down that the moment we surpass 17,600, 18,000 zone in Nifty small cap, then we'll see a decisive trend unfold, and you will see your small cap or your stocks, in your portfolio will also start performing well. But otherwise, sideways to negative tone might continue. So mid caps are comparatively better, but be selective in mid cap space also. Okay. Okay, we have this anonymous attendee on Asian Paints at 2,800 marks. So I understand that uh, still we are not seeing any sign of respite. There was a strong recovery or rebound, but it fizzled out completely.
Crude is still, hovering around 70, $71 mark amid this geopolitical uncertainty. And that's the reason why we are seeing this fresh pressure in Asian paint. So if the view is short term, 2300 is the immediate base. So that should be the stop loss in case if you're okay with that. Uh, in case of recovery, 2550, 2600 will be the strong resistance area, first hurdle, major hurdle. And then probably we might see around 2800 mark, which is your buying price. So as of now, buyers look negative, and if it breaks 2300, it's prudent that you should think about reducing your position. Okay, so yeah, with this we have largely answered all the queries. Thank you very